Hello students, welcome back to my channel. Yesterday we studied a topic called system of linear equations from the chapter called determinants, and we were looking at the conditions of unique solution, infinite solution and no solution. Okay, there we discussed I think three cases. Yes, we discussed three cases. The case number one, it was when the determinant formed by the coefficient of x, y and z is non-zero. If it's non-zero, we so that we get a unique solution. Yes, and I explained also that when it is non-zero, what happens if this is one non-zero value, so x is clearly defined for every value of now dx, dy and dz, same because d is non-zero, so it is clearly defined. So we will get a unique value because dx will give you a unique value, dy will give you a unique value, and dz will give you a unique value. So you will get a unique solution. Okay, and if you got a unique solution, that means the three planes are intersecting. The three planes are intersecting. Okay, see what happens when three planes intersect. As I told you, when two planes intersect, suppose these two planes are intersecting. So if two planes intersect, what will happen? They will make a line. Okay, when two planes intersect, they form a line. Okay, there will be a line of intersection. There will be this intersection point will be what? This intersection part will be this intersection part will be what? A line. Okay, see when two lines intersect, the intersection part is a point. When two planes intersect, the intersection part is a line. Okay, not a point but a line. So a line has infinite solution. Yeah, a line contains infinite number of points. Yes or no? So infinite number of points means infinite solution. Okay, now we are supposed to find what? So there is three equations. There will be three that means there are three planes. Yes or no? So two planes intersect at a line. Now you see the condition. See, if two planes intersect at a line, now you bring the third plane which will intersect it. Now the third plane will intersect by any direction. Suppose it is intersecting like this. Then you can see that this third plane, you can visualize the third plane will intersect where? Two planes are intersecting at a line. So two planes when intersect, we get a line. Okay. Now the third plane, suppose it is intersecting to it. Obviously, this is a line. This line will cut the plane. If this is a series, this is a plane, and this line is passing through this plane outwards or inside. Well, so you will get what? You will just get a point. Yes or no? So you are getting a unique solution. Okay, when three planes intersect, we get a unique solution. Okay, we get a unique solution. Now we move on to the second case. We discussed our second case. It was for the cases. It is a second case. We discussed that if the coefficient matrix, which is formed by the coefficient of x, y, and z, is zero, then in that we have sub cases too. Okay, this is sub case. This was sub case number one. If at least one of dx, dy, and dz is non-zero. Okay, suppose dx is non-zero. Suppose अगर dx, dy, dz में से कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू देता है हमें, तो इस केस में नो सोल्यूशन आएगा. And in that case we say the system is inconsistent, and the equation the case one is called consistent. Okay, this is called consistent system of equation. Consistent means having a solution. Okay, the second case, if either at least one, okay, at least one means it could be 1 dx dy dz be non-zero, or it may be dx dy is non-zero, or the three may be non-zero. Okay, that is the meaning of at least. कम से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, इसका मीनिंग यही होता है. तो अगर सपोज जस्ट थिंक ऑफ इट दैट सी डी इज जीरो. If d is zero, I just give you the logic, give you the logic that if d is zero, you bring this this 0 this side on left hand side, it is 0 x into 0. Now you know that x into 0 will always give you 0 only, so right hand side should also be 0 to get a solution. But you are seeing that on right hand side it is you're supposing that dx is non-zero. अगर आप suppose कर लो कि dx non-zero है, आप suppose कर लो कि dx non-zero है, अगर dx ही non-zero होगा तो it means what? 0 equal something non-zero value. Suppose 5 कुछ 5 आ गया non-zero value, it is meaningless. Yes or no? It is meaningless. ये meaningless हो गया. So that's why we're not getting a solution in this case. Okay, so this statement which you get, it's false, and so we don't get any solution when d is 0 and at least one of dx by d and z is non-zero. Okay,
Now the subcase number 2 comes what? This is a subcase number 2. Subcase 2. This is subcase number 2 when d is 0 and if all the dx, dy, dz is 0. Okay. See, yesterday I forgot to tell you something. In this case also, if solution exists, okay, in this case you can write like this. If solution exists, if solution exists, then it has infinite solution. Okay. ये तो पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मैंने कहा बताया था लॉजिकली, बिकॉज एवरीथिंग इज जीरो, सो यू कैन नो दिस विल गो दिस साइड, it is d x into d and that is dx, and this is also 0, this is also 0. So you take any value of x, any value of x, any real number x, any real number multiplied by 0 is always 0. So this condition, 0 into 0 is always true, always, for every real value. So you will get every solution from R. Similarly for y also, similarly for z also. बट दिस इज व्हेन यू गेट ए सॉल्यूशन, अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तब ये कंडीशन ट्रू है। पर ऐसे भी केसेस है जब आपका ओके मैंने क्वेश्चन किया जिसमें आपने कंडीशन निकाला। ओके मैं आपको एक आज इसके आगे फर्दर समझते हैं कि देयर इज वन मोर केस, केस नंबर that was yeah there was case number 2. Yes, in the inside of case number 2 only I studied case number sub case. Okay, this is case number 3. Sometimes what happens if d is 0 and d and not yeah dx is dy is equal to dz is equal to 0, but what happens, you don't get a solution. Why? And this will to happen, ये भी happen होगा, लेकिन आपको ये भी चेक करना होगा, you have to check. Okay, you have to check, you have to check, आपको चेक करना होगा, you have to check what, you have to check what, to check what, whether the given equations of equation of planes, whether the given equation of plane are parallel or not. क्योंकि अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ है, तो यू जस्ट चेक। ओके, तो आपको ये देखना होगा, तो ये क्या होगा कि अगर इक्वेशन पैरेलल होता है, अगर गिवन इक्वेशन दिया गया हुआ प्लेन्स जो पैरेलल है, इफ प्लेन्स आर पैरेलल, then we will say there is no solution. Okay, we will say no solution. हाँ, एग्जाम में आपको पूछे कंडीशन क्या है, तो ऑब्वियसली यू विल अप्लाई दिस कंडीशन ओनली फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन. लेकिन क्वेश्चन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो यू कैन श्योर बाय श्योरली ओके, तो विल गेट नो सॉल्यूशन. यस और नो, इन दिस केस विल गेट नो सॉल्यूशन. आपको देखिए अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली यू विल चेक फॉर d इक्वल टू 0 एंड dx dy dz यू पुट दिस वन इक्वल टू 0. ओके, लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ दिस इज 0, क्या ये श्योरिटी है? कैन यू श्योरली से दैट यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन? तो नो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स को आपको चेक करना होगा कि कहीं प्लेन पैरेलल तो नहीं आ गया. तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप, मैं जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन लेके देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन. ओके, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई. ओके, सी I'm just taking the equation x minus 3y plus 5z is equal to 4 and 2x minus 6y plus 10z is equal to 11, and the third equation is 3x minus 9y plus 15z is equal to 12. इसको आपको सॉल्व करना है and you have to check whether it has a unique solution, an infinite solution or a no solution actually. तो आपको ये चेक करना है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन इजी है बट इससे कुछ समझ में आने वाला है आपको. तो d is what? d will be 1 2 the coefficient of x y and z, coefficient of x y and z. Okay, coefficient of x is written in the first column, that is 1 2 and 3, and the coefficient of y is written in second column, that is minus 3 minus 6 minus 9. The coefficient of z is written in third column, 5 10 15. Okay, now solve this out. उसको solve करने का तरीका क्या है? You just apply this condition. What you can apply? You see, row 3 goes to row 3 minus twice of
row 1 and row 2 goes to, okay, do you know at a time in determinant, how many operations you can apply? So number of operations you can apply, you should know this, okay? नंबर ऑफ ऑपरेशन, जैसे मैंने अभी जैसे डिटरमिनेंट दिया गया तो मैंने एक बार में दो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 एंड R2, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस एट अ टाइम, लगाने का क्या तरीका है? ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट माइनस वन, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 3 माइनस वन, दैट इज 2, तो आप दो ऑपरेशंस एट अ टाइम लगा सकते हो मैक्सिमम, अगर आपको लगाने का मन है तो मैक्सिमम, ओके, यू कैन नॉट अप्लाई 3 कंडीशन एट अ टाइम, मैं बता दे रहा हूँ आपको ये भी, okay, so this will be R2 minus twice of R1, so what you will get, see this, you will get, see, this will be unchanged, the row 1 will be unchanged because we are not applying anything on over row 1, we are applying over row 2 and row 3. So row 2 is twice 2 minus twice of 1, that is 0, minus 6 minus plus 6, that is also 0, this is also 0, and this is also 0, and this is also 0, and this is also 0. Solve कर देख लीजिए, मैं कंडीशन लगा दिया आपको. So we know that if any row is zero, if any column is zero, the determinant value is zero directly. Yes, but here two rows are zero. So we get the value of determinant as zero. And my determinant value zero mila. I will find dx and dy and dz. Okay, see what happens. Okay, now you see dx is what, just replace the value of the first column of in D by the coefficient of d1 d2, that is constant value, that is 4 11 and 12. तो पहले में आ जाएगा 4 11 and 12, and the rest will be as it is, the coefficient of y, okay, as it is, minus 3 minus 6 minus 9, it was 5 10 and 15. Yes, now again you apply, if you want to apply you can just apply again the same property, R3 goes to R3 minus twice of R1, and R2 goes to R3, sorry, R2 minus twice of R1. Okay, you apply this one, so what you will get, the first one will be unchanged, the second will be what, it is 11 minus twice of 4, that is 8, तो ये आ जाएगा 3, and this minus 6 minus plus 2, it will be 6, it will be 0, it will be 0, it will be what, 12 minus twice of this is 12, 0, this is 0, this is 0, you see, check this out again, see, this entire row is 0, the determinant value will be directly 0. Yes, so dx also you got 0. Now we will find the value of dy. Okay, let's solve this. You just go on solving. Okay, आप solve करते रहिए, मैं नीचे solve कर लेता हूँ उसको. Okay, so dy will be what, just replace in determinant, replace the y column, the value coefficient where we have written the y values, replace by that d1 d2 value. So the first column will be the coefficient of x, that is 1 2 and 3, and this will be replaced by 4 11 and 12, and the z will be same 5 10 15. Again you apply the same property, R3 goes to R3 minus twice of R1, and R2 goes to R2 minus twice of R1. अब चेक करोगे तो जो आएगा ये 1 4 will be as it is, क्या होगा, see, it is what, 2 minus twice of R1, that is 0, 11 minus twice of 4, that is 8, so that is 3, and 10 minus twice of 5 is 10, that is 0, and 3 minus twice of 1 is 0, 12 minus twice of 4 is 0, 15 minus twice of 5 is 0. फिर से इंटायर रो 0 हो गया तो ये भी वैल्यू 0 आ गया. Now you just find the value of dz and you see what will happen. X will be same 1 2 3, लाइन तो बहुत ही स्ट्रेट बना दिया गया, ज्यादा ही सीधा बन जाता है. Y value will be returned. What is the value of y? Minus 3 minus 6 minus 9. The z value, the z value will be replaced by the value of d1 and d2 and d3.
इसमें भी आप सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। देखो आप इसमें फिर अप्लाई करना, इसमें वैल्यू जीरो ही आएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, जीरो ही आने वाला है। यू अप्लाई द प्रॉपर्टी, नाउ यू चेक इट आउट व्हाट हैपेंस। अगर हम अपने कल के प्रॉपर्टी को देखें, कल को रूल को देखें अगर, उस हिसाब से तो क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज जीरो हेयर, so we can say that this is zero. So according to that sub case number 2, we can say it has infinite solution. Yes or no? अगर उस केस के हिसाब से हम देखें, the equation has infinite solution. By that case, if you see that case, that इसीलिए मैंने आपको वो एक केस का, सब केस का बारे में उसका एक ये बताया मैंने, उस केस का बस एक डिसएडवांटेज बताया मैंने। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है या नहीं इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट थिंक आई एम राइटिंग दिस सॉल्यूशन। ओके, इसलिए वीडियो अच्छे से लाइन से देखोगे तो समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा, क्या कहाँ क्या लिखा। नाउ यू जस्ट नीड टू चेक व्हाट, इफ यू जस्ट सी दैट। अच्छा ओके, इफ सपोज यू आर थिंकिंग दिस इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर आप मान लो कि इट हैज सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन z इक्वल टू 2, any value, you can take a z equal to 2 must satisfy every equation, क्योंकि अगर इनफाइनाइट, इफ बाय दिस कंडीशन यू आर सेइंग दैट इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मान लो मैंने ये कह दिया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मैंने मान लिया, अज्यूम किया, तो z इक्वल टू 2 भी एक सॉल्यूशन होगा। यस और नो, z इक्वल टू 2 भी एक सॉल्यूशन होगा। यस, so you just go on putting the solution in the first equation, third equation। चलो पुट करते हैं पहले इक्वेशन में, तो इट इज x माइनस 3y, it is plus 5z, 5 into 2 is equal to 4, it is x minus 3y plus 10 equal to 4, x minus 3y is equal to, we'll get minus 6। ये मिल जाएगा हमें पहला इक्वेशन को आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या करो, z को z इक्वल टू वैल्यू डालो सेकंड इक्वेशन में, दैट इज 2x minus 6y plus 10 into 2 इक्वल टू, मतलब आप कोई वैल्यू ले सकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं 2 क्यों लिया, आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन में देख लो एक बार, ठीक है। ये क्या आ गया, 20 आ गया, 11। ओके, आंसर आना ही है, 2x minus 6y equal to minus 9। Okay, now you see everything you can divide by 2, so you will get minus 3y equal to minus 3। now you just check this out, if you check this out, you're seeing that what, the coefficient of x is equal to coefficient, you're seeing that these two equation is what, the coefficient of x is equal, the coefficient of y is also equal, but the constant value is not equal। if you apply a1 upon a2 equal to b1 upon b2, you will find that this a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, because the value is same। you were just saying, no, एक अंधा भी देख सकता है ना, that means what, the two lines are parallel, so that means no solution। लेकिन अगर अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन का केस होता तो z इक्वल टू 2 के केस में ये जो इक्वेशन आ रहा है तो सॉल्यूशन तो आना चाहिए एक्स वाई का, बट वी आर गेटिंग नथिंग, नो सॉल्यूशन। इट मींस z इक्वल टू डिफाइन, मतलब ये नहीं है, इसका डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो ये मेरा अजम्पशन, और अजम्पशन दैट, ये अजम्पशन जो हमने लिया यहाँ पे, ये जो अजम्पशन हमने ले लिया था कि ये जो अजम्पशन हमने लिया, ये गलत अजम्पशन है। ओके, so this will not happen, this is wrong assumption, ये assumption नहीं हो सकता। so we will write here which implies that solution does not exist। okay, तो ये केस ही था ऐसा कि इसमें सॉल्यूशन आएगा, अगर आ रहा है तो, नहीं एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, खत्म बात, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, when everything is equal to zero, so it is a case of no solution। तो ये हुआ क्यों, अगर आपने अगर ध्यान से इक्वेशन को देखा होता तो आपका क्वेश्चन ये सोल्व था। इस इक्वेशन को ध्यान से, मेरे को फिर से लिखता हूँ इस इक्वेशन को डाउन यहाँ पर,
और हम आज करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज। इसी the equation nicely. If you x minus, it is x minus 3y equal to 4y, it is 2x minus 6y plus 10z is equal to 11. It is 3x minus 6 9y plus 15z equal to 12. Now you try to divide this entire equation by 2. You will get x minus 3y plus 5z is equal to 11 upon 2. If you divide this equation by 3, you will get x minus 3y plus 5z इक्वल टू 4। अब ये तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, बारीकी 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 देखिए, ये तीनों इक्वेशन क्या है, ये दो इक्वेशन जो है ये तो कंसाइड कर गया, बिकॉज everything is equal, this equation and this equation is equal only. This is 4, no, this is 4, okay, so ज्यादा ही अच्छा लिखा गया। So you could find that the planes are what, the planes are, ये दो प्लेन तो कोइंसाइड कर रहा है, द फर्स्ट एंड द थर्ड, बट ये देखो इसका कांस्टेंट वैल्यू इक्वल नहीं है, क्या प्लेन्स क्या हो गया, पैरेलल, पैरेलल प्लेन से तो सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन। तो आपको चेक करना होगा, ओके, आपका देखो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फॉर मोस्ट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपको कंडीशन ये लगाना है, जैसे कंडीशन ये लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये ना पूछा गया, बस बोला चेक करने के लिए कि वेदर द इक्वेशन इज कमिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, और सपोज डी का वैल्यू, dx का वैल्यू, dy का वैल्यू एंड dz का वैल्यू 0 आ जाता है, तो आपको चेक करना होगा वेदर द इक्वेशंस आर पैरेलल और नॉट, ये आपको चेक करना होगा एक बार, ओके। डायरेक्टली आप मत बोल देना कि नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सीधा नहीं, आपको चेक करना होगा, ओके। आई थिंक गॉट दिस, नो, यू हैव टू चेक वंस after getting the value of d, dx, dy, dz as 0, you have to check once whether the given planes are parallel or not. If they are not parallel, obviously infinite solution, okay, you have to check it out. मैंने ये एक इम्पोर्टेंट एक ये रिडक्शन था जो वहां से निकल के आया था, मैं कल बता नहीं पाया था इस बात के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन से मैं चेक कर लूँ, बस x प्लस, ओके, बस x प्लस y plus z, okay, and was x plus 2y 2z, okay. So let's move on to on solving questions. हम we are doing the non homogeneous part, yes, homogeneous part of equation पे हम आएंगे, पहले हम non homogeneous part के questions कर लेते हैं पहले। Let me change the width of the pen. Okay. चलो, now question starts. For what values of a and b, the system of equations, the system of बहुत हवा चल रहा है, the system of equations, an equation is what, 2x plus ay plus 6z is equal to 8, and x plus 2y plus bz is equal to 5, and x plus y plus 3z equal to 4 has, this equation has, first one is a unique solution, सेम कल की जैसा ही है, बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं इसके अंदर, वो हम लेंगे आज। आज हम एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करके देखेंगे जो बहुत सिंपल आया था, बहुत सिंपल था, बस 2016 में आया था आई थिंक, infinitely many solutions, okay, and the third is the no solution, बच्चे बहुत, okay, no solution। now simply आपको d, dx, dy, dz निकालना है, because we are solving by that method only, okay, determinant method, but I have just told you before also, there is one more method in this, okay, by the rank method, and rank method is very beneficial, time saving और बहुत easy है, tough नहीं है,
ओके, बस थोड़ा सा आपको समझना है रैंक क्या होता है। रैंक समझने का मतलब आपको समझना है, लॉजिकली समझना रैंक होता क्या है, बेसिकली रैंक क्यों निकालते हैं, और हाउ डू वी रिड्यूस। हमको क्या करना होता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है बेसिकली। उसमें भी आप जो इसमें करते हो वही करना होता है, बस उसमें क्या होता है कि एक ही एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है, उसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमारा डिस्ट्रक्शन निकल जाता है। इसमें आपको होता है dx निकालो, dy निकालो, dz निकालो, d निकालो, बहुत कुछ में इसमें निकालना होता है आपका, ये सर नो। तो थोड़ा दिक्कत होता है इसके अंदर, इसमें आपको चारों निकालना था, उसके बाद ही आप डिडक्शन कर सकते हो, लाइक यही एडवांस क्वेश्चन में आ जाए अगर, तो उसमें तो ऐसा ऑप्शन देते हैं कि आपको पूरे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है सही से। सो लेट्स फाइंड डी। व्हाट विल बी डी, इट विल बी the coefficient of x in the first column 2 1 1, and coefficient of y in the second column a 2 and 1, and coefficient of z is 6 b and 3। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आता है इसको सॉल्व कीजिए। ओके, और इजी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप बोल क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। If you solve this out, you would get, you should get, okay, you should get this, you should get b minus 3 ब्रैकेट a minus 2 फैक्टर बन जाएगा दो, b minus 3 एंड a minus 2 में फैक्टर बन जाएगा। ओके, सॉल्व कर लीजिए इजीली, बहुत टफ नहीं है। आप एक्सपैंड कर लीजिए किसी भी अलोंग अलोंग एनी साइड, और यू कैन अप्लाई एलिमेंट्री लॉ ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो। You can apply something like R1 minus twice of R3, or you can do this ना, and R2 minus R3। तो क्या होगा, दो दो रो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। okay? Let me tell you how to apply this। R2 goes to R2 minus twice of not twice, this R3, okay, and R3 goes R1, sorry, R1 goes to R1 minus twice of R3। मैं R3 से लगवा रहा हूँ इस पर, ठीक है। क्या बनेगा देखो आप, ये हो जाएगा जीरो, बिकॉज ट्वाइस ऑफ टू माइनस ट्वाइस ऑफ दिस जीरो। ओके, a minus twice of R3 is 2, minus 2, 6 minus twice of this 3, that is 0 again। बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट लगाना बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व करता है। ओके, दिस विल बी 0 डायरेक्टली माइनस किया हमने, 2 minus 1 is 1, b minus 3 is b minus 3, and this will be unchanged। So now you expand by this along this expression, या आप चाहे तो along this कर सकते हो। I think better will be this, no, along this expression। So the first will be 0, ये तो इसके साथ 0 आ जाएगा पूरा। The second will be plus minus, yes, a minus 2 is the coefficient outside। If you do this one, you hide this 2, and you see 3 into 0 is 0, and 1 into this, 1 into this will be what, directly this one, so that is 0। Now the next expression will be plus 0। So आपका directly solve हो गया इस expression में। Now you bring this minus inside of it, so you will get what, you will get, okay, you are getting a negative sign, yes, it is a minus 2। Okay, let me see once, it is a minus 2 and b minus 3, it is R2 minus R3, so we are getting b minus 3 and we are getting a minus 2, no problem with it। Bring this minus inside, we will get 2 minus a and b minus 3। I think something was wrong, okay, here, please check, okay, it may be wrong, okay, so just check, okay। कभी कभी हो सकता है कि मिस्टेकली कहीं लिखा हो इसमें, ओके, जस्ट चेक, ओके, कौन सा सही है। ऐसे तो दोनों एक्सप्रेशन को इतना मायने रखता नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम तो सॉल्व करने के लिए जीरो में। ओके, so now next is what, next is the dx। then you find the dx x, replace the value of x column by the value of d1 and d2 and d3। okay, the value of d1 and d2 d3 is what, the value of d1 d2 d3 is, you can check this question, just saying from the 8 5 4, and coefficient of y is a 2 and 1, and z is 6 b and 3। सॉल्व दिस, ओके, इसको सॉल्व करनी इजीली आप कर सकते हो, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री टू ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन ना, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, इसका आपका सॉल्यूशन बन के आना चाहिए a minus 2। ओके, प्लीज चेक वंस, ओके, प्लीज चेक a minus 2 and 4b minus 15, ये बन के आना चाहिए आपका लास्ट एक्सप्रेशन। ओके, नाउ गो फॉर dy। dy will be what,
write the coefficient of x as it is 2 1 1, and coefficient of is replace the coefficient of y by the coefficient of that 8 5 and 4, and the last it is as it is. If you solve this, you should get what the expression you should get is 0, directly 0. Please try this out. Okay, you will get a value 0. Okay, now dz is equal to, expand this out, and you will get 8 2 and 1 and 8 5 4. So you will, if you solve this out, you will get a minus 2. Please solve. Okay, and please check it out. अगर कुछ गलत है बोल देना आप कमेंट में बाद में, but I think nothing is wrong here. Okay, after getting all this, we will move on to the question asked by the examiner. It is asking for a unique solution. What is the condition of a and b for unique solution? For unique solution, so we know that d shouldn't be 0. And what was d? It was 2 minus a, b minus 3. This shouldn't be 0. So what will happen here? Either 2 minus a is non-zero or b minus 3 is non-zero. Sorry, is saying what is non-zero. Okay, not or, here should be and. Why and? अगर दोनों में से कोई एक जीरो हो गया तो भी तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन. वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी कॉल्ड एंड, नॉट ईदर. सॉरी, should be and. So a shouldn't be 2 and b shouldn't be 3. This is and. Okay, the word is and not the or. Okay, बिकॉज अगर मैं यहाँ वर्ड और लिखता हूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके पास आप ए 2 मत लो, अब बी को 3 ले लो, ऐसा समथिंग मीनिंग होता है ना. तो ऐसा मत हो आप. क्या होता है बेसिकली, आपको दोनों में से कुछ नहीं लेना. अगर आप एक या 2 भी लोगे तो भी आंसर 0 बन रहा है, एक या बी 3 लोगे तो भी. तो ये दिस इज द आंसर. ओके, ए नॉट इक्वल टू 2 एंड बी नॉट इक्वल टू 3. दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट. आई थिंक इजी है ना. आगे बढ़ते हैं. फॉर द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या लगाना है आपको, मैंने बताया था ना. जब पूछा जाए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो कंडीशन तो आपको यही लगाना है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में जो बेसिक अननोन्स है अभी ना, इसलिए. लेकिन आपको क्वेश्चन दे, आप पूछे कि ये क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके पास है कि सोल्यूशन क्या है इसके पास, और तब dx dy dy dz एंड d 0 आ जाए तो आपको चेक करना होगा वेदर द प्लेन्स आर पैरेलल और नॉट. लेकिन अभी चेक नहीं करना है आपको अभी डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को. ओके, व्हेन वी आर पुटिंग d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 होना ही है. क्या है, वेब जस्ट राइटिंग a minus 0, नो प्रॉब्लम विद इट. a minus 0 क्योंकि इक्वल टू 0 ले लो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे से क्या आएगा, आइदर, इसमें आएगा आइदर, इसमें तो ये तो कोई भी एक 0 हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, आइदर दिस और दिस. ओके, यहाँ से ये निकल गया यार. नाउ लेट्स सॉल्व dx. अब dx को सॉल्व करना है इक्वल टू 0 के लिए. व्हाट इज dx? dx क्या है आपका, d of x was a minus 2 and 4b minus 15 इक्वल टू 0 करना है सॉल्व. तो यहाँ से भी क्या आएगा, आइदर a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 15/4. इक्वेशन 2 आ गया यहाँ से. थर्ड इक्वेशन क्या होगा, dy इक्वल टू 0 सॉल्व करो उसको भी आप. dy इक्वल टू 0, dy क्या है आपका, dy क्या है आपका, dy है आपका dy is given to you 0, no, it is directly given to you. हमने सॉल्व किया dy तो 0 ही आ रहा है ना, इस मत से अच्छा क्वेश्चन आ गया. तो dy is 0. now go for dz. dz equal to 0. what is dz? what is dz? dz is a minus 2. it is equal to 0. so we got a equal to 2. तो अब तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन है. तो तो इसका तो नो प्रॉब्लम है. ये dy यहाँ तो dy तो 0 ही है, जैसे कोई कंडीशन निकलना नहीं है. कंडीशन इसको देखो, a बराबर 2 आएगा. फर्स्ट थर्ड फोर्थ कंडीशन इज सेइंग दैट a शुड बी 2. थर्ड कंडीशन इज, सेकंड कंडीशन इज सेइंग दैट a शुड बी 2. थर्ड फर्स्ट कंडीशन इज आल्सो सेइंग दैट a शुड बी 2. b शुड बी 3 भी है. एक केस बोल रहा है b बराबर 3 हो जाए, एक केस बोल रहा है b बराबर 15/4 हो जाए. यस और नो? यहाँ पे b कुछ नहीं आया ना, यहाँ से तो कोई b कोई इशू नहीं है. तो यहाँ से तो b कुछ भी आ जाए, समझो बात. तो यहाँ पे इस dx इक्वल टू 0 के केस में b तो है ही नहीं, b could be any रियल नंबर.
ओके, सिमिलरली इस कंडीशन को देखो आप, इसमें भी कुछ नहीं है तो ये इसमें, इसके लिए तो इसके लिए तो कुछ भी हो जाए, ए और बी हमेशा जीरो ही आएगा। ओके, इसके लिए तो ये फिक्स हो गया, इसके लिए तो फिक्स हो गया। तो हमें इस चारों जो इक्वेशन आया है, इस चारों को क्या लेना है, हमको इंटरसेक्शन लेना है। तो इस चारों के चारों सहमत होने चाहिए एक ही सॉल्यूशन पे। ऐसा नहीं है कि एक सहमत हो गया तो हो जाएगा, नो नो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या होगा हमारा, चारों सहमत कहाँ हो रहा है, ये बोल रहा है बी बराबर, देखो ये देखो ये दिस इज सेइंग दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दिस इज सेइंग ए इक्वल टू, तो बेसिकली ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इंटरसेक्शन ऑफ बिगर एंड स्मॉलर इज गिव्स यू स्मॉलर, तो ये आ जाएगा आंसर यहाँ से फिलहाल के लिए। अब इसका मैं इंटरसेक्शन लूंगा अब अबव से, इक्वेशन 2 और 3 को देखो आप, इसमें भी ए इक्वल टू 2 आ रहा है कॉमन पार्ट, तो ये तो आ ही जाएगा, यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब तो कंफर्म है दैट ए शुड बी, नीचे क्यों ऊपर भी काम नहीं करता, ठीक है, ए शुड बी 2, ये तो फिक्स हो गया। व्हाट अबाउट बी, बी देखो इस केस में हो रहा है बी रियल नंबर, इस केस में बी बोल रहा है रियल नंबर, इस केस में बी बोल रहा है, तो रियल में रियल नंबर, इसमें बोला 15/3 तो 15/4 पे आ गए, फिर ये बोल रहा है 3, तो दोनों एक साथ तो नहीं बोल रहा है कि नहीं, दोनों एक साथ कंडीशन फुल, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बी के पास कोई ऐसा ये नहीं है ना, हमें ए पे ही कंडीशन जो है मेन कंडीशन वो लगाना है, ए इक्वल टू 2, बी कुड बी एनीथिंग, बी से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि बी तो कुछ भी आ रहा है आपका, तो ए शुड बी 2, ओके, ए शुड बी 2, बी आपका कुछ भी आ जाए कोई इशू इससे नहीं रहेगा, ए 2 आ गया तो सब जीरो बन जाएंगे, बी शुड बी एनी रियल नंबर, ठीक है, यूनियन लेना, सॉरी यूनियन लेना होता है, मिस्टेक किया, ये आपका सोल्यूशन आया क्या, दैट the equation will have infinite solution for a equal to 2 and b can be anything, okay, the third condition is for no solution। अब नो सॉल्यूशन के लिए देखना है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, नो सॉल्यूशन के लिए है कि डी तो जीरो हो, लेकिन एटलीस्ट डी एक्स डी वाई और डी जेड में से कोई एक जीरो ना हो। हमने अभी ऊपर क्या देखा कि डी जीरो आने के लिए ए इक्वल टू 2 या ए बी इक्वल टू 3, ये दो कंडीशन आया। dx से हमें निकल के क्या आया था, अगर ये dx जीरो कब हो रहा है, dx जीरो कब आ रहा है, dx जीरो आ रहा है a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 15/4, ओके, y कब dy जीरो कब हो रहा है, dy जीरो तो हमेशा जीरो ही है, बताओ इसको, dz जीरो कब हो रहा है, a इक्वल टू 2। अब देखो आपको तो क्या बोलता है कि d इक्वल टू जीरो लेना ही है, आपको d इक्वल टू जीरो तो करना ही है ऑब्वियसली, d इक्वल टू जीरो करने के लिए सी व्हाट विल हैपन इफ यू आर टेकिंग, अगर आपको एक नॉन जीरो रखना, देखो ये जीरो है इसका तो हटा दो, अब हमें इस dx या dy किसी dy dx और dz को किसी को एक नॉन जीरो करना है। सपोज मैं अगर a को नॉट इक्वल टू 2 ले लूं, सपोज अगर मैं a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 ले लेता हूं, उस केस में क्या होगा, ना ये जीरो बनेगा, ये सॉरी dz तो कभी जीरो बनेगा ही नहीं क्योंकि इसके पास की कंडीशन था, b की कोई कंडीशन ही नहीं है, ये जीरो इस पे नहीं बनेगा पर इस पे जाकर बन जाएगा, और ये जीरो भी इस पे नहीं बनेगा बी इक्वल टू 3, तो एक बोलेगा बी इक्वल टू 3, एक बोलेगा बी विल बी 15/3, तो ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात है ना, ये बहुत ही लॉजिकल बात है, यहाँ से निकल के आ रही है। इसका मतलब है क्या कि हमें ए पे कोई कंडीशन लगाना नहीं है क्योंकि उसे जीरो करना है आपको, ए पे तो कोई कंडीशन भाई, हाँ, ए पे कोई कंडीशन नहीं लगाओगे आप, ओके, तो कंडीशन लगेगा ए तो ए 2 ले सकता है, नो प्रॉब्लम विद इट, ए 2 लेना ही पड़ेगा इसको जीरो करने के लिए, इसको जीरो करने के लिए बस सब जीरो हो जाएगा ना ये। अब कंडीशन लगाना होगा क्या, अब कंडीशन लगाना होगा कि अगर b इक्वल टू 3 आ गया, व्हाट विल हैपन, चेक दिस आउट, b अगर इक्वल टू 3 आ गया तो क्या होगा, सी d3 विल बी जीरो नो प्रॉब्लम, d2 विल बी जीरो नो प्रॉब्लम, d1 को आप ध्यान से देखो, d1 में क्या है 4b-15 लिखा हुआ है, 4b-15, 4b-15 के लिए क्या होता है, अगर मैं b इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, b इक्वल टू 3 आप लो तो आप dz निकाल के देखो, dz देखो क्या आ रहा है, dz जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा
दिस a माइनस टू, ये आएगा आपका, तो नॉन जीरो आएगा बेसिकली, ये तो है कि नहीं। कंडीशन ऑन बी इज व्हाट, द कंडीशन ऑन बी इज बी शुड फॉर बी इक्वल टू थ्री, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर बी इक्वल टू थ्री आता है तो इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा बात। इस क्लास में हम बस इतना रखते हैं, ये दो क्वेश्चन जो हमने किए अभी, एक आपका प्रॉपर्टी बेस्ड था और एक आपका ये जो मैंने कल जो मैंने एक सबके बताना भूल गया था उसके बारे में था, और एक ये आपका प्रॉपर्टी जो कि यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ये आएगा आपका।